हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 18 जून 2022 है। श्रवण नक्षत्र है, पंचमी तिथि है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज का वार शनिवार है और कर्ण तैतिला है। देखिए, आज श्रवण नक्षत्र की अगर बात करें तो श्रवण का मतलब है टू एक्वायर नॉलेज, सुनना, श्रवण करना। और जब आप नॉलेज एक्वायर करते हैं तो उससे पावरफुल चीज कोई हो ही नहीं सकती है। नॉलेज इज पावर। इसीलिए ये माँ सरस्वती का जन्म नक्षत्र है और चंद्रमा की एनर्जी इस नक्षत्र के साथ जुड़ी हुई है। मैंने श्रवण नक्षत्रों के लोगों का बहुत सॉफ्ट और टेंडर हार्ट देखा है। काफी ज्यादा सोशल होते हैं। मैंने बहुत से श्रवण नक्षत्र के लोग फॉरेन लैंड्स पे सेटल्ड देखे हैं। They are possessive, at times bit selfish, but very sensitive in nature. They can give out love very easily and expect the same from around the world. Very, very sensitive. They are sensitive to any comments. अगर उनके जीवन में कोई कुछ उन्हें कह देता है तो उसके लिए वो बहुत सेंसिटिव फील करते हैं। They are good listeners और बहुत सी लैंग्वेजेस सीखते हैं। And they have lot of respect within the family and outside also, depending upon the position of Brihaspati and Chandra. They have good ability to dance, they love music, talented, and lot of people I've seen with Shravana working with their hands. बहुत talented, skilled जो लोग होते हैं। अब इंजीनियरिंग भी बहुत से प्रकार की होती है, लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर जो स्किल्ड इंजीनियरिंग है वो मैंने श्रवण नक्षत्र के अंदर देखी है। They are very much successful in the foreign lands. They live a prosperous life, balanced and modest life, ethical. They study scriptures, Vedas, shastras. They listen and they interpret those things very well. They help others, transform others' lives. Have a good married life if the placement of certain planets are good that are related to marriage. हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं, थोड़ा सा ओवरली कंसर्न्ड विद देयर रेपुटेशन। एट टाइम्स दिस कैन ब्रिंग देम टू बी लिटिल पेसिमिस्टिक। They at times can be extreme in the nature as well. Quick learners. They can learn things very quickly. And I've seen a lot of people in multilinguistic abilities. They have that quest, that thirst for knowledge कि यही अटेन करना है, इसको भी सीखना है, इसको भी सीखना है। अगर वो इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो साथ में आपको उनका हिडन टैलेंट लगेगा कि ही इज आल्सो एस्ट्रोलॉजर, ही वांट्स टू लर्न शास्त्रस। बहुत सी ऐसी पावरफुल चीजें, ध्यान में बैठना। आपको एक बात बताऊं, इंसान सबसे ज्यादा कब सीखता है? इंसान तब सीखता है जब साइलेंस में होता है। When you can connect to your inner silence, that is the time you learn anything. और ज्योतिष पढ़ने के लिए तो आपको केवल दो चीजों की ही जरूरत होती है, याद रखिएगा। एक इनर साइलेंस और दूसरे हनुमान जी। हनुमान जी ही आपको ज्योतिष का वरदान दे सकते हैं कलयुग के अंदर। याद रखिएगा ये बात। जितने भी लर्नर्ड एस्ट्रोलॉजर हैं, कभी पूछ के देखिएगा कि किनकी भक्ति के बाद उन्हें ज्योतिष आया, तो वो कहेंगे हनुमान जी की भक्ति, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। याद रखिएगा ये बात। स्ट्रेंथ, पावरफुल, मेंटली साइकोलॉजिकली थोड़े से सेंसिटिव, नॉलेज में जबरदस्त पावरफुल लोग श्रवण नक्षत्र में मैंने देखे हैं। आज क्या कर सकते हैं? कोई भी नई चीज, आज एडमिशन लेना चाहते हैं ना, तो आज आप कहीं भी कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। और आज मैं अनाउंस करता हूं हमारा नया ज्योतिष नक्षत्र का कोर्स, ज्योतिष रत्ना। हमारी वेबसाइट है astronavneet.com, आप वहां जाइए। जुलाई में मैं वो कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं। अभी डेट फाइनल नहीं की है, आपको बता दूंगा। ये हमारा जो है 5th बैच होगा। और आप ये देखिएगा कि हाउ आर वी यूनिक। देखिए, नक्षत्रों के बारे में सीखना बहुत आसान है कि आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या फेवरेबल है, क्या स्टोरीज हैं,
कौन से ग्रह एसोसिएशन है, कौन से देवता एसोसिएशन है, फाइन, यू कैन लर्न इट फ्रॉम एनी बुक। लेकिन जब एक ग्रह एक नक्षत्र में आता है, एक पर्टिकुलर पदा में आता है, एक कुंडली में आता है, और उस कुंडली में एक पर्टिकुलर लगन होता है, और उसी ग्रह की प्लेसमेंट वर्ग चक्रस में, डिविजनल चार्ट्स में होती है, और डिविजनल चार्ट्स में भी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में होता है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ये हम सिखाते हैं। We'll tell you how to interpret that particular thing, how that is affecting somebody's life. So if you have, that thirst inside you to, that hunger inside you to learn, not maybe not for practicing Jyotish, but for yourself and for your family. It is always good to know, basics, and then if somebody guides you, it is fantastic. And that is how you begin things. So you guys can enroll immediately. We have limited seats. I do not, over rush my batches. I do not get into like, 85, 90, 100, 150 students in a single batch. We don't do that. Right. So that we can, have this particular session interactive. If you're asking me a question, I have time to reply it to you. One should not be unapproachable. As a guru, as a teacher, if you are unapproachable, right, and you will have to write a mail, and we, expect it to come back, or maybe, we put a comment and we expect it to come back after 2 weeks or 3 weeks. I don't think so. That's the SOP. One has to be, if somebody is training someone, someone is teaching someone, one has to be approachable, right? Without being approachable, you cannot give the real knowledge. So it is the time to enroll yourself. It's a great day. आज मंत्र करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जब भी मौका मिले आज 30 मिनट्स का साइलेंस मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस, जस्ट द 30 मिनट्स ऑफ साइलेंस, 30 मिनट्स, जस्ट लीव एवरीथिंग and stay in silence for 30 minutes. That is what we can give to as a respect to Vishnu ji, because you learn everything, you grow in silence. Take care of children, old people, homeless people. It's a rainy season. Go out, see if somebody is hungry, give some food. इतनी बारिश है, किसी को भूख लगी है, किसी को खाना दे दीजिए आप जाकर। हो सकता है किसी के बच्चे को दूध ना मिला हो, रो रहा हो। ऑफिस से उठिएगा, देखते आइएगा कि कोई गरीब होमलेस तो नहीं है, 2 पैकेट दूध ले लीजिएगा, दे दीजिएगा। चंद्रमा भी ठीक हो जाएंगे, विष्णु जी साइलेंस से आपकी ठीक हो जाएंगे, कोई कर्म आप नहीं बनाएंगे। और सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस इतना ही करना, और फिर देखना जीवन कैसे आगे बढ़ता है। आज का टिप दे देता हूं। लोग कहते हैं गुरुजी हम ये उपाय कर रहे हैं, वो उपाय कर रहे हैं, नथिंग इज वर्किंग, कुछ नहीं हो रहा है। उपाय कब काम नहीं करते हैं? व्हेन रेमेडीज डजंट वर्क। उपाय तब काम नहीं करते हैं जब आपका कैरेक्टर खराब होता है। आप बोलेंगे कैरेक्टर, कैरेक्टर डजंट मीन इट्स about, it is your thought about the opposite sex. No, character can be of many types. Character is how you behave, character is how you speak, character is how you think, how much ethical you are. You think you are ethical, but you may not be. How much grounded you are as a guru, as a teacher. Do you have forgiveness? If you don't have forgiveness, if you cannot motivate, how to forgive someone. Someone comes and says, oh, you know suppose there's a husband and wife relationship, and wife says कि आप मुझे टाइम नहीं देते, आप नाराज हो, आपको प्रॉब्लम है मेरे से, I'm sorry. And then you say, okay, fine, forgiven. Have you forgiven? No. Forgiveness is when you can motivate your life partner to do something creative. That is the forgiveness from inside, rather than you think, okay, forgiven, you live your life in the same house, I live my life in the same house. No. If you want forgiveness, you have to work for that person. You have to work for that forgiveness. Develop your character so that Mother Nature can help you. कुदरत आपकी मदद कर सके,
इसलिए आप अपने कैरेक्टर को ओपन करो, अपने अपने आप को फीडबैक के लिए ओपन करो। अगर आपकी कुदरत आपकी मदद नहीं कर रही है, you're doing all the puja part, something is wrong with the way you are approaching life. Sit back and think about it. सोचो कि आप सुबह से शाम तक किसी को कोई प्रोडक्टिव चीज करके दे रहे हो? क्या आप किसी को खुशी दे रहे हो? क्या आपने सिर्फ बोलने के लिए केयर किया? Have you done that? Then it's not worth it. Mother Nature mantras are not going to help you. It is just like you take medicine and then you eat junk again. How will medicine help you? Doctor always advise you to eat light and nutritive food or nutritious food when you're having medicine. If you're going to gym and you're coming back and having junk, how will gym help? Similarly, if you're doing so many remedies and you're doing nothing to improve yourself as a human, you can't motivate, just motivate one person a day. Your mercury will increase, your finances will increase. Are you motivating? No, you're not. If you're not motivating, nothing is going to work for you. Develop your character, mental character, psychological character, physical character, sexual character. Then you will get result from your spiritual character. Otherwise, you won't. I'm sorry. Develop your intelligence in a way that you are so grounded and you have this big heart to forgive people. You learn this, when you get shocks of your life. But what if you learn without getting shocks of your life? That's the tip of the day today. मैं कल फिर आऊंगा, तब तक आपको प्यार भरी राम राम, हरे कृष्णा।